Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday I was revised the questions from the solid state and solutions, and also some questions from the third chapter, electrochemistry and chemical kinetics. So I was completed these two questions from the chemical kinetics. Which are those two questions? First one, what is the effect of the catalyst? Effect of the catalyst and temperature on the rate of the reaction. This is the one question I was explained. Second question, what is the order of the reaction? Order and molecularity. Give the examples for the order and molecularity. Unimolecular, bimolecular. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सेकंड वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन सेकंड वाला. And also some questions are left in this, that is the collusion theory postulates. Write the postulates in the collusion theory बोल के बोल रहा. So in this collusion theory देखिए, ये लास्ट क्लास में मैं ये दो समझाया था. collusion theory के postulates रिवाइज कर रहा हूँ मैं एक बार से. In this collusion theory, first you have to know that collusions are responsible for the chemical reactions. Colliding molecules should possess certain minimum amount of energy, then only product is formed. I am writing that points. First one, how the chemical changes are taking place because due to the collusion between the molecules. Collusions are responsible for chemical change or chemical reactions. Collusions are responsible for chemical reactions. Colliding molecules should come in proper orientation में आके collide होना, तब product form होता. ये first postulate है. Second one, colliding molecule should possess certain minimum amount of energy. जो colliding molecules हैं, वो colliding molecule के पास certain minimum amount of energy रहना, then the collusion between them gives the product. That is the energy is called as the threshold energy. तो second point क्या लिखना आप याद रख लेना. आप second point threshold energy का definition लिखना. Colliding molecule should possess. What is the threshold energy? ये लिखना है. Colliding molecules should possess certain minimum amount of energy. Certain minimum amount of energy called as threshold energy. Then only collusions between them gives products. This is the another postulate. Now what is the third postulate in this? You have to see this diagram. This is the energy of general molecule and it is the threshold energy. This is which energy? Threshold energy, and this is the energy of general molecule. At the STP, energy of the general molecule is very less when compared with what? Threshold energy. Reaction होने के वास्ते इतना एनर्जी होना भाई, केमिकल चेंज होने के वास्ते, मगर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा रहता. तो ये मेंशन करना, एनर्जी ऑफ जनरल मॉलिक्यूल्स is very less when compared to the threshold energy at STP. This is another postulate.
Now then fourth postulate activation energy का definition है activation energy. Activation energy. What is the activation energy? Well, see that this is the energy of general molecule. This is the threshold energy. The difference between the energy of general molecule and threshold energy. Difference between threshold energy and energy of general molecules is called क्या मतलब यहाँ जनरल मॉलिक्यूल की एनर्जी यहाँ पे है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे है, इनके जो बीच में डिफरेंस है ना, इट इज कॉल्ड एज व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी. ये डेफिनेशन लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में. Difference between threshold energy and energy of general molecule is called which energy? Activation energy. Okay. So this is the activation energy definition. कभी तो BSc में पूछ सकता what is the activation energy? Difference between the threshold energy and energy of general molecules is called as activation energy. Now next, activated molecules are formed. Activated मतलब इतने एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कैसा फॉर्म होते, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कैसा फॉर्म होते, उसके बारे में लिखना है. एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड by the collision between general molecules. By the collision between general molecules. Okay, I'm giving this equation. A plus A gives A star plus A, and A star activated molecule form हुआ भाई general collision से. These are the general molecules. एक की एनर्जी एक को आगे समझिए, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स आ गया ए स्टार वाला, और collision between A star and A star gives what? Product. Collision between the activated molecules gives the product. This is another postulate. Okay. Now then, see this A plus A. These are the general collisions. A star plus A general collisions है, और इनको क्या बोलते हैं? Activated collisions बोलते हैं. Gives the product. It is called as which collisions? Activated collisions. General collisions are these activated collisions are very less in number when compared with the general collisions or collision between the molecule. ये और एक postulate है. Activated ऐसे collisions बहुत कम रहते हैं और ऐसे collisions बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो ये another postulate. This is another one. Activated collisions are very less in number when compared with the collision between the general molecules. Now then, the number of collisions in second time in unit length area is called क्या बोल के बुलाना? Collision frequency. ये भी definition पूछता. What is the collision frequency? What is the activation energy? तो ये लिखना, the number of collisions in second time in unit length area. How many collisions are taking place in this certain length? ये unit length के अंदर एक second time में कितने collisions हो रहे हैं? How many collisions are taking place in a given length or in a unit length area in second time is called as collision frequency. So this is the definition. Now then, last postulate, as the temperature increases, the specific rate of the reaction is also increases. That is given by the equation, Arrhenius equation. Yesterday I was given that equation. You see that once again I am writing specific rate of the reaction K is equal to AE power minus CA by RT. So इसका मतलब क्या है? इक्वेशन में क्या मतलब आता है इक्वेशन का? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीजेस. दीज आर द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स इन द कोल्यूशन थ्योरी. नेक्स्ट ये चैप्टर से एलेक में कोल्यूशन थ्योरी, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी. 19 क्वेश्चन जो है ना, 2 बिट्स बना रहा हूँ. फर्स्ट बिट ए बिट,
राइट द postulates in the collusion theory बोल के पूछता, या नहीं तो राइट अबाउट द ऑर्डर molecularity of the reaction, राइट एग्जांपल्स बोलता। और नेक्स्ट सेकंड बिट जो है इसके अंदर, सेकंड बिट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आती भाई, मतलब ए बिट के अंदर ये 4 मार्क्स और बी बिट के 4 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा आता होगा, द कॉलरॉश लॉ एंड एप्लीकेशंस है, एंड एप्लीकेशंस ये हो सकता, नहीं तो कौन सा होता वो गाल्वानिक सेल, कभी तो फ्यूल सेल पूछ रहा है, ये गाल्वानिक सेल नहीं तो कॉलरॉश लॉ एंड एप्लीकेशंस ज्यादा आ रहे हैं। इंशाल्लाह 19th क्वेश्चन इसी में से रहेगा। Write the postulates. So there are 2 bits are there in the 19th question. A bit is either collision theory or order and molecularity. In the B bit there are 2 questions are there. First one Colruyt and applications or galvanic cell. तो इससे ये 19th क्वेश्चन हो जाता, तो अच्छा सा पढ़ लीजिए। Colruyt and applications इससे पहले भी समझाया हमें, ये galvanic cell है, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। Galvanic cell is a device which converts the chemical energy into the electrical energy. Okay, what is the galvanic cell? बोले तो a device which converts which energy, chemical energy into what? Into electrical energy. Chemical energy into electrical energy. The device is called as galvanic cell. By using what? By using spontaneous redox reactions होते रहते भाई इसमें। तो केमिकल एनर्जी जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऐसा कन्वर्ट होती। जो भी बैटरीज यूज कर रहे हैं अपन, ये पूरे गाल्वानिक सेल के हैं। ड्राई सेल है, लिक्लांकी सेल है, लेड अक्यूमुलेटर्स है और एसिड स्टोरेज बैटरीज, ऑल दिस आर अंडर दिस गाल्वानिक सेल ओनली। सो इधर देखिए गाल्वानिक सेल का कंस्ट्रक्शन है, ये डेफिनेशन हो गया कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट टू हाफ सेल्स, लेफ्ट हैंड साइड इज फिल्ड विद द ZnSO4 एंड जिंक रॉड्स। इसके अंदर देखिए ऐसा लगा देते। ओके, दिस इज द LHS का कंपार्टमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड सेल है। और राइट हैंड साइड सेल RHS के अंदर copper sulfate solution is taken and in this copper rods are placed. ओके, कॉपर रॉड पे प्लेस करते हैं और इन दोनों को इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज एंड एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द बैटरी। सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन। In this left hand side, this is the reaction takes place. Zn gives rise to Zn plus 2 electrons. Oxidation takes place. In the right hand side, Cu plus 2 takes 2 electrons and converted to the Cu. What is the overall reaction in the galvanic cell? Cu plus 2, before that Zn plus Cu plus 2 gives rise to Zn plus 2 plus Cu. This is the overall reaction takes place. This total reaction is represented in short, that is called as cell notation of the galvanic cell. So Zn in left hand side, Zn is converted to Zn plus 2. We are separating this with the salt bridge to parallel lines. Cu plus 2 is converted to the Cu. It is called as the cell notation of the galvanic cell. This is about the galvanic cell construction and some reactions which are taking place in this galvanic cell. Now next question, Colruyt and applications. Okay, it is applicable for the very dilute solutions. To know the conductivity of the very dilute solutions, other methods are not useful. So by the extrapolation of the graph also we can't determine the conductivity of the weak electrolytes. In that case, Colruyt law is applicable. So what is the Colruyt law? Limiting molar conductance of the weak electrolyte. Limiting molar conductance of the weak electrolyte, that is I am writing like AB. Limiting molar conductance of the weak electrolyte is equal to the what? Sum of the conductivities or mobilities of the cations
and mobilities of the anions present in that solution. For example, I am taking this one here, NaCl electrolyte को ले लिया मैं, तो इसको कैसा अप्लाई करना है भाई, कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मोबिलिटी ऑफ Na प्लस ले लेना, ये Cl माइनस लिख लेना. सो इस तरीके से. सो दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट. Limiting molar conductance of weak electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of the conductivity of cations and anions, or sum of the mobilities of the cations and anions present in that solution. This is the equation is called as Colruy's law. Okay, ये Colruy's law का equation है, वो statement पढ़ाया हमने. तो ये equation है इसका. ये देखिए ये equation है. Then फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन अगर पूछे तो ये ले लेना भाई, एक इक्वेशन लेना. इफ द कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन्स इज Na प्लस, ऐसा ले ले रहा हूँ. इफ द कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आयन्स, ओके, ऐसा ले लिए तो देन द टोटल कंडक्टेंस क्या होता है, यही होता. इसको थोड़ा अलग से सेपरेट से ऐसा लिख लेना. टोटल कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस एंड सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द Cl माइनस. सो दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन. स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन. स्टेटमेंट ये हो गया और ये एक्सप्लेनेशन हो गया. इसके एप्लीकेशंस के बारे में बोल रहा हूँ. In the application, first conductance of the weak electrolytes like acetic acid can be calculated. Weak electrolytes की conductance मालूम कर सकते हैं. Like the acetic acid can be calculated. How we can calculate it? See that conductance, molar conductance of the CH3COOH थोड़ा ऐसा indirectly मालूम कर सकते हैं. देखिए कैसा लिख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके salt की conductivity ले रहा हूँ जो strong है उसको ले रहा हूँ या नहीं, प्लस फिर क्या कर रहा हूँ बोले तो जो स्ट्रॉन्ग है फिर उसकी कंडक्टिविटी ले रहा हूँ, HCl ले लिया मैं. इन दोनों की कंडक्टिविटी को मैं मिला ले रहा हूँ. मिला लेके क्या कर रहा हूँ मालूम है, ये NaCl की कंडक्टिविटी हटा दे रहा हूँ मैं. ये भी स्ट्रॉन्ग है, NaCl की कंडक्टिविटी भी मालूम होती है अपने को. तो सोडियम एसीटेट की कंडक्टिविटी प्लस HCl की कंडक्टिविटी दोनों को मिला के उससे NaCl की कंडक्टिविटी निकाल दिए तो CH3COOH की कंडक्टिविटी आ जाती है इस तरीके से. ओके, बेस्ड ऑन दिस some problems are also given. You see that problem, these values are given. ये values दे देता, इन दोनों को ऐड करके उसको subtract कर लिए तो you will get the answer. So this is about the first application. Conductance of the weak electrolytes like acetic acid is calculated with the help of the Colruy's law. Next, degree of dissociation of the weak electrolyte. Extent of the dissociation of weak electrolyte can be calculated with the help of the Colruy's law. Okay, so with the help of this we can determine the degree of dissociation. Okay, तो कैसा भाई, कंडक्टेंस एट द नॉन कॉन्सेंट्रेशन डालना, कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन डालना. डाल लिए तो कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंडक्टेंस एट द नॉन कॉन्सेंट्रेशन, दोनों इन दोनों के बीच में जो रेशियो आता है दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. So solubility of the sparingly soluble salts can be calculated. Solubility of less soluble salts or sparingly soluble salts. Less soluble salts can be known how much that is soluble, can be known with the help of what? With the help of Colruy's law. These are the applications. तो ये क्वेश्चन हो गया Colruy's law and applications का. नेक्स्ट व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी बोल के पूछना बेटा, और एक क्वेश्चन है ये VSAQ में आ सकता. प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स किसको बोलते हैं? which become dead after using of this बैटरी को इस्तेमाल कर दिया, उसके अंदर का केमिकल खत्म हो गया, फिर उसको रीयूज नहीं कर सकते, तो उनको क्या बोल के बुलाते हैं? प्राइमरी सेल्स बोल के बुलाते हैं. प्राइमरी सेल्स
which cannot be used again and again. Okay, once the chemical reactions are over, that life is over, that become dead, we cannot reuse that battery. That is called as primary battery. Secondary battery, which can be used again and again. बैटरी को आप बाहर से चार्जिंग कर दिए तो यहाँ पे चार्जिंग हो जाती, फिर निकालने के बाद उसका रिवर्स काम करती, डिचार्जिंग होना शुरू होती, फिर चार्जिंग और डिचार्जिंग ऐसा बार बार होते जा रही, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय मींस ऑफ दी चार्जिंग करते जा रहे हैं, फिर यूज कर रहे हैं उसको, फिर यूज कर रहे हैं, तो ऐसे बैटरीज को क्या बोल के बुलाते हैं? सेकेंडरी बैटरीज बोल के बुलाते हैं. लेड अक्यूमुलेटर्स, एसिड स्टोरेज बैटरीज आर एग्जांपल्स फॉर द सेकेंडरी सेल्स. एक बार यूज कर लिए, जैसा घड़ी की बैटरी है उसको ड्राई सेल बोलते हैं, लिक्लैंकी सेल. दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द प्राइमरी सेल्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द करोजन? करोजन किसको बोलते हैं भाई? इसके बारे में भी 2 मार्क्स में पूछ रहा है. तो कन्वर्शन ऑफ द मेटल टू देयर नेचुरल स्टेट. कन्वर्शन ऑफ द मेटल, कन्वर्शन ऑफ द मेटल. देखिए कौन सा भी मेटल प्योर स्टेट में नहीं रहता. आयरन को जमीन में डाल दिए तो Fe2O3 कैसा बन जाता? रस्टिंग ऑफ द आयरन, दैट इज कन्वर्टेड टू द रस्ट. तो ऐसा एक प्योर मेटल नेचुरल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा. कन्वर्शन ऑफ द मेटल टू देयर नेचुरल स्टेट, ऑफ द मेटल टू इट्स नेचुरल स्टेट, by taking a moisture, air, etc. So that is called as what? Corrosion बोल के बुलाते हैं, metallic corrosion बोलते हैं इसको. So this is about the metallic corrosion. These are the some important questions are there in the electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एग्जाम में पूछ रहा वो समझाए बेटा. इसमें फैराडेस लॉस भी है, स्टेटमेंट पूछ सकता, नहीं तो ऐसे कि मैं पूछ सकता हूँ. तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं. फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, Faraday's laws of electrolysis. Before going to that, what is the electrolysis? When electricity is passed through the solution. Which solution? Electrolytic solution. By using the cathode and anode. Cathode and anode. Cathode negative rod. Anode is the positive rod. With the help of the cathode and anode, we are passing the electricity through the electrolytic cell. As a result of that, metals are deposited at the cathode and non-metals are liberated at anode. This is the process is called as electrolysis. What is electrolysis? पूछा भाई एक बार एग्जाम में, what is electrolysis? Write the Faraday's laws of electrolysis बोल के पूछ रहा. तो when electricity pass through the electrolytic solution, by using the cathode and anode, metals are deposited at the cathode and non-metals are liberated at the anode. This is the process called as the electrolysis. Faraday's laws of electrolysis. In this Faraday first law, by doing the so many experiment, Faraday find the relationship by क्या है? That relationship given in the form of the law, that is called as the Faraday's first law. Faraday's first law. What is the Faraday's first law? See here, if you are passing the more amount of the current through this solution, ज़्यादा current pass कर लिए, okay, mass of the substance deposited is directly proportional to the quantity of the current. ज़्यादा current pass कर लिए तो ज़्यादा substance deposit होता बोल रहा. कम current use करे तो कम substance deposit होता. That is called as Faraday's first law. Important है ये Faraday first law. इस बार आ सकता है एग्जाम में. एनुअल में ये दूसरे पूछा, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, कोलिजन थ्योरी पूछा था. अब जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता Faraday's law. इधर इन SAQs ने तो LAQ में एक बिट बोला था ना 19th में, वो क्वेश्चन में ही आ सकता है. व्हाट इज Faraday's फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ? ये स्टेटमेंट्स याद रख लीजिए, इसका छोटा प्रॉब्लम है वो भी देख लीजिए. व्हाट इज द Faraday फर्स्ट लॉ? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स is directly proportional to the quantity of the current passed through this solution, passed through the electrolytic solution. You know that quantity is equal to time in second, current in amperes. So C into T लिख सकते, M proportional to C into T, M is equal to E C T, इसको electrochemical equivalent बोलते हैं. This is about the Faraday's first law. Now next about the, what is the Faraday's second law? Faraday's second law. In the second law, different electrolytic cells are connected in a series in this manner. First one is filled with the ZnSO4, second one is filled with the CuSO4,
and in this H2SO4 is there. For example, I'm writing these various cells. Okay, okay, these are connected in a series, इससे इसको और इससे इसको और इन दोनों को एक बैटरी को मिला दिए. If I am passing the same amount of the electricity, same electricity pass कर रहे हैं भाई different electrolytic cells से which are connected in a series, the amount of the substance, यहाँ पे zinc deposit हो रहा ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रहा. द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स, कितना डिपॉजिट हो रहा है इसके बारे में बोल रहा. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट, उनके केमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड होता बोल रहा. केमिकल इक्विवेलेंट ज्यादा है तो ज्यादा सब्सटेंस लाइक दैट. ओके, एट हियर यू हैव टू राइट दैट रिलेशनशिप. व्हाट इज दैट? If same electricity pass through these different electrolytic cells which are connected in a series, the amount of the substance deposited at the respective electrode is different, because the amount of the substance deposited at the electrodes depends upon what? Their chemical equivalents. The amount of the substance depends upon what? Depends upon their chemical equivalents. That is known as the Faraday's second law. That is the mass of the substance m1 by m2 in this cell, that is the mass of Zn by mass of O2 लिख सकते हैं. Electrochemical equivalent of the Zn by, that is the E1 by E2 कैसे भी लिख सकते. सिंपली वो इक्वेशन को Faraday's law के m1 by m2 is equal to E1 by E2 के लिखते हैं. So this is about the Faraday's first law and Faraday's second law. और galvanic cell के बारे में बोला, प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स बोला, मेटालिक करूशंस के बारे में बोला, ये VSAQs है, और ये फेराडे फर्स्ट लाइन सेकेंड लॉ मिला के SAQ में पूछता. सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स. नो थर्ड चैप्टर तक आगे अपन रिवाइज कर रहा हूँ फिर से एक बार. तो फोर्थ चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है? दो SAQs सरफेस केमिस्ट्री में, दो SAQs, तीन SAQs मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दोज आर इम्पोर्टेंट. फर्स्ट वन देखिए कैटालाइसिस है, कैटालाइसिस के टाइप्स है. नेक्स्ट वन राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन. फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज द कैटालाइसिस? Catalysis is the process in which catalyst is used to increase the speed of the reaction. Okay, by increasing the catalyst, if the speed of the reaction is increased, that is the process is called as catalysis. Process in which catalyst is used to increase the velocity of the reaction is called as catalysis. Based on the physical state of the reactant and catalyst, the process of the catalysis is of how many types? Two types. First one is what? Homogeneous catalysis. Second one is the heterogeneous catalysis. What is the homogeneous catalysis? If the physical state of the reactant and catalyst is different, if the same, homo means same, hetero means different. Okay, I'm writing this example for the homogeneous. Here SO2 plus O2, 2SO2, it is gas and it is also gas. You see that the catalyst which we are using, that is the NO at here, nitric oxide, it is the gas. As a result, you will get the 2SO3. So this is the reaction in which physical state of the reactants and catalyst. ये physical state, ये gas, ये भी gas है. So such type of the reactions in which reactant and catalyst की physical state same है, तो उसको क्या बोलते हैं? Homogeneous catalysis बोलते हैं. Next, heterogeneous catalysis. If we are using, that means if the physical state of the reactants and catalyst is different. अब यहाँ पे N2 ले ले रहा हूँ भाई मैं, plus 3H2 है. Okay, N2 is the gas, H2 is also gas. Reversible bond 2NH3, and at here we are using this iron. It is the solid substance. N2, H2, these are the gases, and F is the solid. If the physical states are different, it is called as what? Heterogeneous catalysis. Then another one, physical chemical adsorption. Physical chemical adsorption, based on the affinity present between the dispersion phase and dispersion media, adsorption is of two types. First one is what? Physical adsorption. Second one is what? Chemical adsorption. Physical adsorption में between the adsorbate and adsorbent,
adsorbate and adsorbent. Adsorbent, physical van der Waal forces are acting बोल के लिखना, physical forces are acting, in this chemical forces are acting. Next, it is the weak adsorption and it is the strong adsorption. It is multi-layer process, multi-layer, and it is unilayer process, unilayer process, and it is non-specific, non-specific, and it is what specific, specific, and it is a reversible process, a reversible, and it is what irreversible process, irreversible process. और फिर उसके बाद में it is decreases with the temperature, it is increases with the temperature, it increases with the pressure, it has no effect of the pressure. Okay, so these are the differences between physical and chemical adsorption. ये दो क्वेश्चन से क्वेश्चन आता देखिए आप लोगों को बार बार बोलते जा रहा हूँ मैं, कैटालाइसिस और फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, इसमें इमल्शंस बोल के भी क्वेश्चन है. तो व्हाट आर द इमल्शंस, इमल्शंस किसको बोलते हैं, इमल्शंस. ओके, व्हाट इज द एमल्सिफायर, इसके बारे में भी 2 मार्क्स में आता, इमल्शंस है. ओके, कोलॉइडल सॉल्यूशंस in which liquid droplets are distributed in the another liquid, that means dispersion phase dp is also liquid, liquid, and dispersion media is also liquid. लिक्विड में लिक्विड ड्रॉपलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. फॉर एग्जांपल मिल्क है भाई, मिल्क में ऑयल क्या है भाई, व्हाट इज दैट ऑयल, दैट इज आल्सो लिक्विड. एंड ये वाटर प्रोटीन्स वगैरह, ये पूरे वाटर के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो लिक्विड के अंदर लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उनको क्या बोलते हैं, एमल्शंस बोल के बुला रहे हैं. ओके, तो थोड़े एमल्शंस अनस्टेबल रहते हैं, उनको स्टेबल बनाने के वास्ते जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एमल्सिफायर बोलते हैं, एमल्सिफायर. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. तो वाटर है भाई, वाटर में मैं केरोसिन डाल दिया, केरोसिन डाल दिया तो केरोसिन का लेयर अलग है, वाटर का लेयर अलग रहता, तो फिर ये अनस्टेबल है. तो स्टेबलाइज करने के वास्ते मैं डिटर्जेंट या सोप वाटर ऐड कर रहा हूँ. मैं सोप वाटर ऐड करते ही ये पूरा स्टेबलाइज हो जाता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता हो. तो टू कीप द emulsion stable, external reagent is added to the emulsion, that is called as the emulsifier. Emulsions are of 2 types. First one first one is what, oil in water type, oil in water type, और सेकेंड वन इज द वाटर इन ऑयल टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप. ऑयल इन वाटर आप मिल्क ले सकते हैं, और यहाँ पे वाटर इन ऑयल कॉड लिवर ऑयल है, ओके, ग्रीस है, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर वाटर इन ऑयल. यहाँ पे ऑयल कम रहता, वाटर ज्यादा रहता. डिस्पर्शन फेज इज ऑयल, डिस्पर्शन मीडिया इज वाटर. इन दिस वाटर इज द डिस्पर्शन फेज, वाटर ज्यादा रहता, वाटर कम रहता, ऑयल यहाँ पे ज्यादा रहता. Okay, so these are the some important questions in the chapter number 4, chapter number 4 से. and remaining previous classes में मैं बोला बेटा ये ऐसे कि उसमें important है, उनको एक बार रिवाइज कर लिया मैंने. ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी के कंप्लीट करता हूँ इंशाल्लाह.